Good morning, students. Welcome to the VBPS online class. Student, today I will going to revise again this story explanation. Okay? Because some students told me that they are absent that day when I was explain this story. So they told me and request me to explain again this story. So students, I will explain again this story. So listen very carefully. Okay, this story. So let us start. बच्चों, this story name is The Vain King. Okay, The Vain King. So in this story, the writer says that until you treat everyone as an equal, you have no right to complain about the treatment you receive from anyone. Okay? So, in this story, I hope you all understand this story. Okay? So, in this story, it means student service to humanity means attempt to help the needy. Okay? And always instead on social service as the only way to reach the God. This philosophy of life was to serve the humankind by your kindness and sympathy. Okay? So students, in this story, the there was once upon a time there lived a king who was proud of his power. He was feared by all. So this story is based upon the king who was proud of his power. Okay, so let us start this explanation. Once upon a time there lived a king who was proud of his power. He was feared by all. One day the king, out of arrogance of his power, declared in his court that he was the master of the world and the people were his servant and they should worship him instead of God. Once upon a time there lived a king. बहुत समय पहले एक king था who was proud of his power, जो कि अपनी पावर पे बहुत ही गर्व करता था. Okay, he was feared by all. One day the king, out of arrogance of his power, declared in his court that he was the master of the world and the people were his servant. Okay, and they should worship him instead of God. So, out of fear, the people accepted his order, except an old man called Rahim. Okay, they should worship him instead of God. So, Rahim protested the king's order by saying that all men were equal and servant of each other. So, people assembled in the court were shocked to hear the protest. Their blood froze in fear. Okay? The king was furious. He got up from the throne. He angrily shouted at the people and asked who dared to speak against his order. जो किंग था वो बहुत ही गुस्से में आ गया और उसने कहा कि कौन है जिसने उसके बोलने का विरोध किया. Rahim, holding a stick in his hand, shouted back from the crowd that he spoke against his order. The king asked his sentries to bring Rahim to him. King ने अपने दरबारियों को कहा कि वो उसको इस ओल्ड मैन को पकड़ के ले आए. ओके, आफ्टर दैट fearlessly Rahim went to the king. The king asked Rahim whether he knew the punishment for disregarding the order of the king. The king further asked him about his purpose of coming to his court.
Rahim told the king that he was not afraid to die for speaking the truth. रहीम ने क्या कहा कि वो सच ही बोलेगा, चाहे इसके लिए उसे मौत की सजा भी क्यों ना मिले. ओके, सो he further told the king that he had come from a nearby village to request the king to get a well dug in their village, where people were suffering due to shortage of water. The king laughed at Rahim and told him that on one hand he was begging for water and on other hand he was disregarding the king's order. किंग शॉक था और हंस भी रहा था कि रहीम एक हाथ से तो उनसे पानी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके, और दूसरे हाथ से वो उसका ऑर्डर भी नहीं मान रहा है. तो क्या है ऐसा, इस बात पे उसको हंसी आई. सो द किंग वार्नड रहीम दैट ही वुड लूज हिज हेड इफ ही फेल्ड टू प्रूव हिज स्टैंड. किंग ने कहा रहीम से कि वो उसका सर अलग कर देगा अगर उसने अपना जो स्टैंड है, जो उसने बोला है, उसको वो प्रूफ ना करे. ओके, आफ्टर दैट रहीम एक्सेप्टेड द चैलेंज. रहीम ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया. ही टोल्ड द किंग दैट इट वॉज कस्टमरी टू टच द फीट ऑफ द किंग बिफोर प्रूविंग माई एनी पॉइंट. उसने कहा कि किसी भी पॉइंट को प्रूव करने से पहले वो राजा के पैर छूना चाहता है. द किंग एग्रीड. राजा सहमत हो गया. रहीम moved forward towards the king and requested him to hold his stick while he touched his feet. रहीम ने रिक्वेस्ट किया राजा से कि वो उसकी स्टिक को पकड़ ले तब तक कि वो उसके पैर न छू ले. रहीम told the king that he had, after touching his feet, उनके पैर टच करने के बाद रहीम ने कहा कि उसने अपने पॉइंट को प्रूव कर दिया. कैसे? द किंग वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन. किंग बहुत ही सरप्राइज था. उसने कहा कि इसको आप एक्सप्लेन तो करिए कि आपने किस तरह से अपने पॉइंट को प्रूव किया है. रहीम एक्सप्लेन दैट द किंग बिकेम हिज सर्वेंट फॉर अ मोमेंट. रहीम ने एक्सप्लेन किया कि किंग उनका कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ पल के लिए किंग उनका सर्वेंट बन गया. कैसे? क्योंकि उसने किंग से बोला था ना कि आप इस स्टिक को होल्ड करिए. ओके, व्हेन ही हेल्ड द स्टिक वाइल रहीम वॉज टचिंग हिज फीट. जब उसने उसके पैर छुए थे तो तब तक के लिए राजा ने उसकी छड़ी को पकड़ा था. तो उसने बोला कि राजा तब तक के लिए मेरा सर्वेंट बन गया, क्योंकि उसने उसकी आज्ञा मानी. ओके, द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. किंग को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. ही रिवॉर्डेड रहीम बाय डिगिंग 3 वेल इन हिज विलेज. उसने रहीम को इनाम दिया और उसके गांव में उसको पानी पहुंचाया. ओके, एंड ऑल्सो अपॉइंटेड हिम एज वन ऑफ हिज एडवाइजर. और अपने सलाहकार के रूप में उसको अपॉइंट किया. सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपकी एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है. आई होप यू ऑल आर वेल अंडरस्टैंड. ओके, आफ्टर दैट moral of the story क्या है? All people are equal and serving humanity means serving God. All people are equal and serving humanity means serving God. Means सभी human being एक ही होता है और वो भगवान की तरफ से मनुष्यों की सेवा करता है. ओके, so this story explanation is finished now and you all are done your exercises
Okay, and the exercises is you tick the correct statement, fill ups, match the following. Okay, I hope you all are also wrote your moral thought in this chapter. Okay, so well, read and understand this story. And again I said that if you have any doubt, students, so ask me in your class group.